Alright, so today we're going to learn about the Routh stability criteria. Routh stability is a very good way to identify a longer chain of polynomial stability. For example, आपके पास एक polynomial है which is not quadratic form और उसकी जो डिग्री है वो that's above 3 or more. मिसाल के तौर पे ये एक है polynomial है which is b not s m plus b1 s m minus 1 plus you will carry on till bm minus 1 s plus bm, right? And has a denominator, and denominator says like a naught as n plus a1 as n minus 1 plus dot 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 till a n minus 1 s plus an, right? So ये इसका numerator which says the information about the zeros, and ये इसका denominator है which gives the information about the poles of my particular system, right? So ये ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँ और इसका मैं स्टेबिलिटी इन्वेस्टिगेट करना चाहूँ, सो इट इज वेरी टीडियस कि हमारे पर एक लॉन्ग मेथड से इसको प्रोसीड करना होता है. The route harvest tells a very interesting mechanism to identify the stability of my particular system. It says like मेरा system इस तरह का है, so I can transform it. This is the numerator, so I can take the numerator. It has the highest degree n. It has the highest degree n, and it goes down to degree s की power 0, right? सही है. तो इसको मैं एक लिस्ट डाउन कर लूँगा, something like s की power n, s की power n minus 1, s की power n minus 2, and moving downwards, s की power n minus 3, s की power n minus 4, till drop down to very very initial s square, s1 and s0. So I list down कर लिया, right? So all I have is Sn, n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4, and so on and so forth till it reaches to the 0, s square, s1, s0, right? So मैंने इसका list down कर दिया, and इसके respective coefficients जो है मेरे पास उसको मैंने mention कर दिया. I have coefficient like a naught यहाँ लिख दूंगा मैं a0, then a1, then a2, a3, a4, a5, a6, a7, and so on so forth. ठीक है. Similarly, each के जो position है मैंने आइडेंटिफाई की कि ये इस तरह गया, then it reaches to here, then it drops down, then it reaches to here, then it drops down, then it reaches to here, and then it drops down, and so on so forth, right? So इसको basically zigzag form में मैंने इसको placement कर दिया. फिर मैंने क्या करना है, मैंने basically एक और variable define करना है which is b1, b2, b3, b4, and so on and so forth. मैंने इसको भी मेंशन कर दिया. Similarly c1, c2, c3, c4, and so on and so forth भी मेंशन कर दिया. इतने यहाँ पर d1, d2, d3, d4 के वैल्यूज फाइंड आउट किए, और मैं जब यहाँ एंड में आ जाता हूँ, so I left with e1, e2 and all zeros other. ठीक है. And eventually I have f1 and g1, right? The last two terms supposed to be singular, f1 and g1, else are zero terms. ठीक है. तो ये चीज़ मुझे इस तरह से मैपिंग करनी है. सही. तो इनिशियली जो मेरे पास कोएफिशिएंट है डिनोमिनेटर में which tells the information about the characteristic of my system, तो वो बेसिकली मैंने इसको zigzag पोजीशन पे रखा, and then I have variables b, c, d, and then e, f. लास्ट के टू वाले हैं, this is very special case कि these two are single,
single coefficient, right? Where where values of b1 is equal to a1 a2 minus a naught a3 divided by a1 b1 b2 is equal to a1 a4 minus a naught a3 divided by a1 and so on and so forth. Similarly, value of c1 is equal to b1. So b1 can be find out by here b1 b1, and then I have a3 minus a1 b3 divided by b1. Similarly, c2 is equal to a actually b2 b1 a5 minus b3 a1 divided by b1, right? And it goes like this. And then I have values of d. D is again dependent of c1 b1 c1 b2 3 minus c2 b1 upon c1. So c1 comes from here, and then I have d2 is equal to c1 b3 minus b1 c3 divided by c1 and so on and so forth, right? तो इस तरीके से मैं basically इनके values को identify कर सकता हूँ. Eventually I need to find f1 and f2. Let's have an example. Line 11, the book example. It says like I have a polynomial a naught sq plus a1 s square plus a2s plus a3 is equal to 0. Okay, ये मेरे पास बेसिकली एक डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है और इसको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ इस पॉलिनोमियल की स्टेबिलिटी. ठीक है, apparently it looks like stable, लेकिन it very highly dependent on the system coefficient. तो coefficient की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं? I will place as cube, मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ. I will place the highest coefficient as cube, then as square, then as, and then finally I need to place another coefficient which is s की power 0, s की power 1. तो ये एग्जाम्पल है और मुझे इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे कोएफिशिएंट प्लेस करने. तो ए नॉट इधर आ जाएगा, a1 इधर आ जाएगा, a2 इधर आ जाएगा, a3 इधर आ जाएगा, राइट? तो प्लेस इट इन दिस एग्जैक्ट फॉर्म. ठीक है, तो मैंने प्लेस कर दिया एंड देयर इज नो अदर टर्म. तो इधर क्या आ गया आपके पास? बेसिकली 0. ठीक है, एंड 0 फाइन फॉर्म और फर्दर ऑन. ठीक है, और s1 is basically here, s1 is a2 b1, ठीक है, and then another 0, and then here they're supposed to be c1 and another 0, right? So b1 को find out करेंगे. b1 is equal to, just like I said over here, b1 is equal to a1 a2 minus a naught a3. ठीक है, तो a1 a2 minus a naught a3 divided by b1. ये b1 आ गया मेरे पास, divided by a1, right? So a1 आ गया मेरे पास, b1 आ गया. And similarly for c1 is equal to b1 a3 minus b3, and b3 in our case is 0. ठीक है, तो
A1, actually it is B1 A3. Okay, so I will place B1 A3 minus 0 divided by B1. Okay, तो ये basically B1 से cancel out हो जाएगा. So eventually I will get C1 is equal to A1, right? तो ये basically आपके पास हो जाएगा this वाला term B1 is equal to A1 A2 minus A0 A3 divided by A1, and C1 is basically equal to, right?